Good morning, my dear student. Today we will discuss and study relationship between total utility and marginal utility with schedule and diagram. My dear student, in the last lecture हमने देखा था relationship between total utility and marginal utility and its effects. अब हम देखेंगे कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम कैसे बनता है. नाउ कम टू द पॉइंट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू, लेट्स सी शेड्यूल ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. नाउ इन दिस वी हैव टेकन 7 units. At first unit, consumer total utility and marginal utility both are same. But as consumer consume from 1 unit to 2, 3, 4, 5, 6, 7, total utility increases but at diminishing rate, whereas marginal utility diminishes and it becomes at last negative. Now this schedule we will learn from the given diagram. In the given diagram we have taken total utility and marginal utility on OY axis, whereas we have taken unit consumed by the consumer on OX axis. चलिए हम इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं. एट फर्स्ट यूनिट आप देख रहे होंगे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी बोथ आर सेम. तो मैं लेता हूं एट फर्स्ट यूनिट टोटल यूटिलिटी इज 10. इट्स आवर यूनिट कंज्यूम. एट फर्स्ट यूनिट कंज्यूमर्स गेटिंग 10 units ऑफ टोटल यूटिलिटी. ओके, ये हमारा 10 है. On second units, consumer getting 18 total utility. But first of all, we have to solve the marginal utility and then total utility. Now comes to the point. Marginal utility is 10 first. At second stage, marginal utility is 8. At third stage, marginal utility is 6. At fourth stage, marginal utility is 4. At fifth stage, marginal utility is 2. At sixth stage, marginal utility is 0. And seventh stage, marginal utility is -2. Here is -2. Okay. Now total utility is 10 at first. Marginal utility, total utility, and next unit is 18. At third stage or units, total utility 28. At third stage, total utility is 24. At fourth stage or units, total utility is 28. At fifth one units, consumer is getting 30 utilities. And at 6th unit, the utility remain constant. It means it is 30. At last unit 7, consumer is getting 28 units. Okay, my dear students,
we are observing in this diagram as at point 6 and 5th consumer is getting same utility, that is called satiety point, but we have to plot all this diagram with points like this. Now we will join this point here at 5th and 6th unit. Total utilities are constant, that's why we say this point of satiety. Here, consumer is getting full satisfactions, but further he will consume 7 units, he will get total utility at diminishing, as you are seeing, observing here, and the marginal utility becomes negative. We will write like this, -2 at point 7, and we can show like this. Okay, my dear students, now we understood that as total utility increases but at diminishing rate, marginal utility diminishes and becomes 0, and after that it became negative. Okay, my dear student, हमने बहुत आसानी से इसको समझ लिया। ये कर्व को कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत आसान कर्व है। आप पहले मार्जिनल यूटिलिटी वाला शेड्यूल ले लो, मार्जिनल यूनिट्स ले लो, मार्जिनल यूटिलिटी को पहले बताओ 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, and after that total utility it increases 10, 18, 24, 28, 30, 30, 28. Just only add marginal utility into total utility, okay, and that utility you have to show in the given diagram and show in the diagram. Okay. मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आसानी से आप शेड्यूल को विद डायग्राम समझ गए होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में जब कभी भी आएगा, एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, तो आप बहुत इजी से इसको कर सकते हैं, बता सकते हैं। आप पहले शेड्यूल बनाइए और उसके बाद आप उस शेड्यूल को डायग्राम के जरिए शो कीजिए, पॉइंट्स ले लीजिए पहले, एंड आफ्टर दैट शुड बी ड्रॉन अ डायग्राम बाय जॉइनिंग ऑल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी शेड्यूल। ओके माय डियर स्टूडेंट, आपको मेरी बात पूरी समझ में आएगी। बहुत आसान है ये आपको बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरा आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे difference between total utility and marginal utility, and after that we will go law of diminishing marginal utility. Okay my dear student, कुछ भी आपका कमेंट्स होगा, कोई बात अगर मेरी समझ में नहीं आई होंगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके थैंक यू, और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आया।